हाय, आप में से कितने लोग हैं जो रात को एसजीएक्स निफ्टी या नैस्डैक के टिकर्स को देखकर सोते हैं? और क्यों नहीं, स्टॉक मार्केट्स आज ग्लोबली बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्शन पर हैं। यूएस में रिसेशन आने के डर से मार्केट्स में फिलहाल एक कॉमन थीम चल रहा है, डीप करेक्शंस और वॉलेटिलिटी। यूएस बेस्ड ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने उनकी रिपोर्ट में कहा है कि 30% प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले एक साल में यूएस इकोनॉमी रिसेशन में एंटर हो जाएगी। बैंक ऑफ अमेरिका का भी कुछ ऐसा ही कहना है, पर वो इस मामले में थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट है, 40% प्रोबेबिलिटी। हालांकि अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ में लोअर दैन एक्सपेक्टेड स्लो डाउन की उम्मीद है और ईजिंग कमोडिटी प्राइसेस के कारण पिछले कुछ दिनों में फ्रेश बाइंग देखने को मिली है। लेकिन क्या मार्केट्स बॉटम आउट हो चुके हैं? ये तो कोई नहीं बता सकता। इस समय सबसे क्रूशियल वेरिएबल है कि यूएस में रिसेशन कितना इंटेंस होने वाला है। रशिया यूक्रेन वॉर और हाई इन्फ्लेशन के चलते जो टर्बुलेंट कंडीशंस क्रिएट हुई हैं, उसके थ्रू यूएस फेडरल रिजर्व किस तरह अमेरिकन इकोनॉमी को स्टीयर करता है, इसका इम्पैक्ट बाकी सारी कंट्रीज पर जरूर देखने को मिलेगा। जैसे कि एक कहावत है, व्हेन द यूएस इकोनॉमी स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस अ कोल्ड। मगर क्या यूएस में रिसेशन सही में इंडिया के लिए नेगेटिव है? आइए सुनते हैं एक्सपर्ट से कि यूएस रिसेशन का इंडियन स्टॉक मार्केट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आज के वीडियो में हम आपको फॉलोइंग एक्सपर्ट्स के व्यूज दिखाएंगे। सौरभ मुखर्जी मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। सौरभ ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से इकोनॉमिक्स में बीएससी और एमएससी कंप्लीट किया है। इसके अलावा सौरभ एक सीएफए चार्टर्ड होल्डर भी हैं। रुचिर शर्मा एक इन्वेस्टर, ऑथर, फंड मैनेजर और फाइनेंशियल टाइम्स के कॉलमनिस्ट हैं। इसके साथ साथ वो हाल ही में रॉकफेलर इंटरनेशनल के चेयरमैन बने हैं। इसके पहले वो मॉर्गन स्टैनले इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में इमर्जिंग मार्केट्स इन्वेस्टर रह चुके हैं। मिस्टर प्रशांत जैन ने आईआईएम बैंगलोर से पास आउट होने के बाद अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी एसबीआई कैप्स के साथ शुरू की। प्रशांत वैल्यू इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के एक बड़े समर्थक रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली ही एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में अपना 27 साल पुराना सफर पूरा किया है। तो चलिए पहली क्लिप सुनते हैं, जिसमें सौरभ मुखर्जी अपने व्यूज बता रहे हैं कि कैसे यूएस में रिसेशन और इंडियन इकोनॉमी जुड़े हुए हैं। The simple point that I'll drive at in this chart is our country's economy is so straightforward to understand that whenever America goes into recession in year T, in year T plus 1, our boom begins. By boom, I mean a period of rising economic growth, right? So let's go through that. Why does this happen and how can we benefit from it? The red chevrons in the chart are India's economic booms. We've had only 4. The dark gray areas that stand out, they are periods of recession in America. And you'll see, first you get the dark gray area and then you get the red chevron. So let's take it one by one. America went into recession 1979 because of the Gulf oil price, the oil price zipping up in the graphs. There was the hostage crisis in Iran and so on. 79 to 81, America was in recession. 1982, India's first economic boom after independence started. It lasted 5 years. I was in school in Delhi, and I remember several of my classmates stopped using the school bus. First, they would come to school in Maruti cars, which in those days was a unimaginable luxury. And then a few of them, us zamane ke unusual billionaires, started coming to school in imported cars, right? It was unbelievable, right? And all happened in 5 years. The first 5-year economic boom in India, 82 to 87. America went into recession, 1990, Gulf War hua 91, 90 to 92, America was in recession, 90 to 92. 93, our second economic boom began. It lasted till 97. The East Asian crisis, the Russian crisis put paid to that. As everybody knows, America went to recession 2000, dot-com bust. Agle saal 9/11, then Ketan Parekh scam in India. 2000 to 2002, America was in recession. 2003, 2004, our third economic boom began. That lasted till Lehman Brothers, 2008, fat gaya. 2008, America went into recession. India's last economic boom began 2009. It ended in 2011, right? So this rule, US recession T, Indian boom T plus 1, is a 100% success rate, 4 out of 4, right? Now, the reverse is also fascinatingly true.
It does not matter what policies we announce in our country. If America does not go into recession, you don't get a boom in India. Right? Now, why? Why is this? Why does this link exist? Now, let's move to the two lines. The two lines in the chart. Those lines contain the answer. The orange line is the price of crude oil. Right? America is the world's largest user of crude. When America goes into recession, the price of crude falls by 50 to 80%. A 50 to 80% drop in the price of crude is around a 3% of GDP stimulus gift to us because we import oil, right? So first off, when oil got smashed from $85 to $0, we immediately did the maths and said 4% GDP we're getting gift from the world, right? That's an immediate boost. You don't have to do any science for that. Now, I think the government's done the right thing. They've kept the price of petrol or diesel at the pump same, or actually they've raised it a bit and they've loaded up taxes on it. They're taking that money and funding the fisc, which I think is fine. But the boost to us is unquestionable. Basically, we get a free gift of 3-4% of GDP when oil gets smashed. The blue line now, that's the 10-year bond yield, US 10-year bond yield, right? It's been falling for our entire careers. Most specifically though, wherever there's a gray area, wherever there's a US recession, the US 10-year bond yields falls even more sharply. Because when America goes into recession, the Federal Reserve cuts rates. Typically in a US recession, the US 10-year bond yield falls 2.5%. When in a US recession, the US bond yield falls, US interest rates fall, the RBI passes it on to you and me because at that juncture, they don't have to worry about the current account deficit. Why? Because oil is already squashed. So an American recession, astonishingly, leads to 2.5% drop in cost of funding in our country. सौरभ मुखर्जी ने बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमें यूएस रिसेशन, इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के बीच का कोरिलेशन समझाया है। और जैसा कि उन्होंने कहा, जब भी यूएस में रिसेशन आने की बात होती है तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलती है। और क्योंकि इंडिया मेनली एक डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, हमारे लिए लो कमोडिटी प्राइसेस, स्पेशली लो क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर हो जाते हैं बढ़ते इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। लो कमोडिटी एंड ऑयल प्राइसेस हमारी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फेवरेबल होते हैं। कंपनीज के लिए लो इनपुट कॉस्ट का मतलब हाई प्रॉफिट मार्जिन्स होता है। साथ ही साथ इंडिया अपनी 80% क्रूड रिक्वायरमेंट्स इंपोर्ट के थ्रू पूरी करती है। और जब ऑयल प्राइसेस गिरते हैं तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंडियन रुपी स्ट्रॉन्ग होता है और हमें इंपोर्ट सस्ते पड़ते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट ये इंडिकेट करता है कि कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करती है और जब ये कम हो जाता है तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाती है, जिसके कारण हमारी डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जैसा कि सौरभ जी ने बताया, जब भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है तो सस्ते इंपोर्ट्स और इंडस्ट्रीज के लिए लोअरिंग इंपोर्ट एंड इनपुट कॉस्ट हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। और जब इंडियन इकोनॉमी में एक बूम होता है तो इसका डायरेक्ट कोरिलेशन इंडियन मार्केट्स के साथ होता है, यानी कि इंडियन मार्केट्स में एक अच्छी रैली होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कि मार्सलस टीम की T+1 थ्योरी का स्ट्राइक रेट 5/5 होता है या नहीं। अब सुनते हैं सेकंड क्लिप, जहां रुचिर शर्मा अपने व्यूज बता रहे हैं कि क्यों कैपिटल का फ्लो यूएस मार्केट से इमर्जिंग मार्केट्स में हो सकता है। So, Rashid, that explains why perhaps the United States and China won't do as well in the next 10 years as they did in the last. What makes us think that the emerging markets are in a place to pick up the slack? Well, I think there are a couple of things going on for emerging markets here. One, I think it's really important to put this in perspective that these emerging markets that we're talking about, whether it's India, Indonesia, or even the likes of Eastern Europe, these countries did not have the resources to spend that much on stimulus when the pandemic hit. So these countries really were forced to carry out some more fundamental reform. In India, the priority seems to have shifted again towards economic growth. They are focusing more on issues like privatization. Indonesia, they're changing the labor laws. So I think what you're seeing in emerging markets is the difference between stimulus, which the Western countries adopted in great measure, and in emerging markets, which did some stimulus, but not to the same extent. So they were forced to carry out more productivity-enhancing reforms to try and revive the animal spirits. So I think that's one very important factor.
Ruchir, you have a piece in Foreign Affairs, the current edition of Foreign Affairs, that struck me when you did a comparison of the extent to which the U.S. and China occupied the global market or the global economy, as opposed to the value of the stocks, and how that compares to emerging markets that would suggest that perhaps the U.S. is overbought. Go through those numbers. Yeah, I think that this is the extreme value trade out there, so to speak. But if you think about it for the next 5 to 10 years, so here's the snapshot. The United States today is roughly about 26% of the global economy. But the US stock market today is over 60% of global stock market capitalization. That's a huge gap that's opened up, a gap that was never there. At the start of last decade, the number was 25% of global economy was the US share, but the share in the stock market, global cap, was about 40% or so. So massive gap has opened up out here. Now, some people say this is because the US has so many global companies. Even adjusting for that, the US share in global stock market cap is over 50%. I think that's far too much of an allocation of capital towards the United States. At the other end of the spectrum are emerging markets, especially emerging markets outside of China, which account for more than 20% of the global economy, but their share in the global stock market capitalization is well below 10%. So this, like for me, represents a lot of value out there. रुचिर शर्मा का मानना है कि यूएस मार्केट्स के कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट के लिए इमर्जिंग मार्केट्स बेहतर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स के पास स्टिमुलस देने के लिए इतने रिसोर्सेज नहीं थे। तो पैंडेमिक के दौरान उन्होंने फंडामेंटल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे फोकस किया। इंडिया की बात करें तो पैंडेमिक के कारण जो रिफॉर्म्स अंडरटेक किए गए थे, उनकी वजह से आज हम एक सॉलिड फाउंडेशन पर हैं, जहां से हम आगे जाकर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देख सकते हैं। मिस्टर रुचिर शर्मा का ये मानना है कि यूएस में जो एक्सेस कैपिटल कॉन्सेंट्रेशन है वो आज नहीं तो कल इमर्जिंग मार्केट में फ्लो हो सकता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में यूएस शेयर ऑफ ग्लोबल स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन 40% से बढ़कर 60% हो गया है, जो उनके 26% शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा है। ये गैप काफी बड़ा है, जिसकी वजह से वहां वैल्यूएशंस काफी अनरीजनेबल हो गई हैं। अब सुनते हैं क्लिप जहां प्रशांत जैन अपने व्यूज बता रहे हैं कि क्या ये टेम्पररी है या फिर लॉन्ग टर्म। आई थिंक एक बेटर क्वेश्चन ये होगा इसमें कि यदि यूएस में रिसेशन आया, क्योंकि इंटरेस्ट कितने बढ़ेंगे तो क्या होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि उससे हमारी इकोनॉमी को लाभ ही है, क्योंकि हम तो देखिए जो तेल का दाम है ये हमारी इकोनॉमी के लिए बाहर का सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएबल है, और अगर बाहर की इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन आता है तो उससे तेल का दाम कम होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो वो इंडिया के लिए फायदेमंद है। प्रशांत जैन का मानना है कि यूएस में बढ़ते इन्फ्लेशन को रोकने के लिए अगर यूएस फेड रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगा तो चांसेस हैं कि वहां आने वाले समय में इकोनॉमिक स्लो डाउन आ सकता है। और ऐसे में उनका भी ये मानना है कि यूएस में स्लो डाउन आने की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हो जाएंगे, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है। तो जैसा कि हमने देखा, तीनों ही एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर यूएसए में रिसेशन आता है तो इंडियन इकोनॉमी को उस केस में अच्छा फायदा हो सकता है। तीनों ही इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर बहुत ही बुलिश हैं। यूएस में स्लो डाउन की वजह से पोटेंशियली लो क्रूड प्राइसेस इस स्टोरी को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसलिए कई इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमीज जैसे कि इंडिया, चाइना, फिलीपींस और इंडोनेशिया यूएस रिसेशन से कुछ हद तक इंसुलेटेड रहेंगे। रिसेशन के फियर की वजह से क्रूड ऑयल ऑलरेडी गिरकर अपने 12 वीक लेवल तक आ पहुंचा है और ग्लोबल निकल, एल्यूमिनियम और स्टील प्राइसेस भी हेविली करेक्ट हुए हैं। और मूडीज का जुलाई 2022 ग्लोबल इकोनॉमिक साइकिल का एनालिसिस देखें तो यूएस रिसेशन के रिस्क पर है और इंडिया का आउटलुक फेवरेबल है ऑन द बेसिस ऑफ सस्टेन्ड हाई इंडस्ट्रियल आउटपुट्स। लेकिन हमें कुछ और फैक्टर्स पर भी सोचना जरूरी है। आईटी इंडस्ट्री हमारे जीडीपी में अराउंड 8% कंट्रीब्यूट करती है और उनका मेजॉरिटी रेवेन्यू यूएसए से आता है। यूएसए में रिसेशन का सीधा मतलब होता है कि वहां पर डिमांड का स्लो डाउन, ये हमारी आईटी कंपनीज पर भी एक एडवर्स इंपैक्ट डाल सकता है। तो एक पर्टिकुलर मैक्रो कंडीशन को एनालाइज करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप ग्लोबल स्केल के अलग अलग फैक्टर्स को भी ध्यान में रखें। क्या आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में बताइए और ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस वापस जल्दी लेके आएंगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.